Hello and welcome to MVP, the Master's Voice podcast. I'm your host and friend Pawan R. Chawla, founder, editor of MediaBrief.com, and I'm delighted to welcome a very special guest, someone who's one of India's most respected anchors, presenters, editors in the finance segment, in the finance business space in India. Please join me as I welcome Anuj Singhal, Managing Editor, CNBC Awaaz. Anuj, welcome to this episode of MVP, the Master's Voice podcast, and thank you so very much for your time. Pawan, thank you so much. And, I'm feeling honored and privileged to be invited by you and to be on your podcast. Thank you so much. Looking forward to a riveting conversation. You took the words out of my mouth. I am honored and privileged too because you are on the show, and I really hold you in very high regard. Just as all of India Inc. actually looks up to you. Thank you. Thank you so much. So thank you for your time. And thanks also to your wonderful comms teammates. There are two people I must specially mention, Mithali and Amoli of your comms teams for having made this interaction possible. Very grateful to them. So Anuj, by your leave, I'm first going to read about you, especially for the youngsters who might not know too much about you. बाकी तो जो भी लोग मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के स्पेस में, न्यूज़ की स्पेस में, बिजनेस की स्पेस में और इंडियन एंटरप्राइज और उसमें इन्वेस्ट करके अपना और देश का फायदा करने की स्पेस में हैं तो वो सब तो आपके बारे में बहुत 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 अच्छी तरह से जानते हैं. दे आर लाइक अ choir आई विल नॉट प्रीच टू. लेकिन यंगस्टर्स के लिए आपकी प्रोफाइल. सो बाय योर लीव, हियर गोज. Anuj Singhal is amongst India's most popular, most experienced, and certainly amongst the most knowledgeable and respected stock market anchors. Anuj joined CNBC TV 18 as a research analyst straight out of college way back in 2003 and has been with Network 18 ever since. So 5 years after he joined it, Anuj became head of research in 2008, head of markets desk in 2018. Another 5 years. 5 is a good number for you, Anuj. And stocks editor of CNBC TV 18 in 2015. Wahan bhi 5 hai. Anuj was elevated to the post of managing editor of CNBC Awaaz in September 2022. And since then, Anuj has been instrumental in shaping the leadership position of CNBC Awaaz on both linear television and digital. Anuj has tracked the Indian financial markets for at least 2 decades, and for a period between 2013 and 2022, he was the lead anchor for both the market flagship shows of CNBC TV 18, Bazaar and Closing Bell. Anuj interacts with top India Inc. leaders and stock market investors and has a wide social media presence with more than 250,000 followers across platforms. So that also is amazing. But why am I not surprised? This economics honors graduate from Delhi University, my viewers and listeners, and postgraduate diploma holder in finance is the go-to stock markets expert for many traders and investors. In fact, Anuj Singhal is very often called the Nifty magician for getting his big market calls right. So that's Anuj Singhal, my distinguished guest and expert on this episode of MVP, the Master's Voice podcast from MediaBrief.com. Anuj, thanks very much again for being on this episode. And now let's begin our conversation. Thank you. Thank you so much, Pawan. I didn't know so many things about myself. Thank you for, saying all this. Self-effacing as always. Thank you. So, Anuj, you're the Nifty magician, like I said, even in the beginning for India Inc. leaders and stock market investors. तो शुरुआत में ही क्यों ना अपने listeners or users, viewers वगैरह का थोड़ा सा फायदा कराते चलें. With all the necessary disclaimers that they are always aware of, be careful, be conscious, be very, very discreet before you invest in anything. लेकिन I want you to share some advice with our listeners and users of MediaBrief.com for the medium or longer term. Which 10 stocks would you advise our listeners to buy, or if they already have them, hold on to, assuming the investor takes all precautions, as I said? Please. Wow, that's a big one. Look, with the standard disclaimer that I am not in a position to advise, but what I would say is that, and you always should consider your financial advisor before making any buy or sell calls. I am not authorized to do that, but I'll tell you about a few stocks, that come to top of my mind in terms of, which I personally believe have been among the best and would continue to be among the best
over the next 10 or 20 years. And I think most of that list may sound boring to you, but I've learned one thing in stock market: boring is good. Boring makes you more money than anything else if you hold it for a period of 15 to 20 years. So straight away, I think the two large banks, I think HDFC Bank and ICICI Bank, they would be part of any portfolio, should be part of any portfolio. I would say the same about the two large Indian IT stocks, Infosys and TCS, two stocks which have perhaps been the biggest among the biggest multi-baggers. Infosys surely has been for a lot of investors, a lot of retail investors, for everyone. I think those would be the other two I would look at. Maruti is a stock which I believe always that, if you have it in your portfolio and if the market was shut for 10 years, you should not be having any problem. Maruti is in that category. So I think that would be number five in my list. Bharti Airtel is another stock which I have been quite positive about and quite vocal about it. We're going through a data revolution in this country. There was a time when 5 GB a month was a lot of data. These days you consume sometimes 5 GB a day. And it's the Yes. data prices are only going to go up. We are rock bottom in terms of pricing. And what people don't realize is that while a 250 rupee package becomes 280, that's not a lot of pinch in your pocket. For the company that's offering that, that's straight away a 10% jump in the margin. So I think that's something that I would look at. So that's number six. I think Larsen and Toubro should be part of any portfolio. I think Larsen and Toubro is proxy to India. I mean, if India is doing well, Larsen and Toubro is doing well. Very simple. Just go to the last 1 month announcement of Larsen and Toubro and see the kind of order book, the kind of orders that they're getting. Everything is remarkable. Mahindra and Mahindra would be my number eight, I would say. Again, these are names which are coming impromptu to my mind. But those are top of my mind. Mahindra and Mahindra, the bet I am taking here is on the management. Mr. Anish Shah is, I think, right now among India's most dynamic and flamboyant CEOs, and I think he's going to do wonders. I think 9 and 10, if you want to add a little bit of risk to your portfolio, a little bit of risk Hmm. to your Hmm. portfolio, I think would be say IDFC First Bank. Again, it's a bet on the management, Mr. V. Vaidyanathan, being the kind of guy that he is. And number 10, this may be a bit controversial for a lot of people, but would be Paytm. I think because you should always have some stocks in your portfolio which are a bit of an option play that they can become 5 or 6 times, or you can lose some money here, but if it works, it works really well. Again, I'm saying standard disclaimer: these are not recommendations. If you're acting on them, please consult your financial advisor. Well said. Thank you very much indeed. That's a beautiful list. And I also see that you are, there is a modicum of maybe 80% being circumspect and 20% perhaps Absolutely. some element of risk for the higher gain. When you get to 43, you learn so much in life that you want to be slightly on the defensive side. Correct. Absolutely. Absolutely. So after that upbeat little piece of advice on stocks, etc., uh, I would like to come to the Israel Palestine conflict, the war that now has been declared by Israel. What would you advise businesses? Which ones are likely to be impacted? Okay. So I think, look, Pawan, there are two things. One is you got to differentiate as an investor and as a trader. What we Correct. will have right now, and we have a very recent example of Russia-Ukraine war. Before that, there have been instances of the Gulf War. Before that, even the Vietnam War. You pick up any war, the market impact of the war lasts for about 1 week to 10 days. And that 1 week to 10 days, the market is tough, like we saw even recently. The market gets very tough, but and your trading orientation should be to respect the screen and to respect the levels. And the market's telling you that it's getting into some kind of a trouble, then you want to get out of leverage positions, you want to get into the safety of good stocks, or you want to even short the market and make money, you can do that. Nothing wrong in that. But if you are an investor, then this is the perfect time to go back to the previous answer, shortlist your 10 stocks, make a list and say that, okay, this is the price at which if I get an entry, I will enter no matter what happens. Because at the end of the day, this war is not going to have a direct impact on India. There are some Hmm. companies which are directly involved, but even there, I think the impact will be limited. The only joker in the pack is crude oil prices because India as a country imports all of its crude requirement. And
India's macro is directly connected to what's happening in the crude market, in the oil market. Sure, If oil sure. goes for a boil and goes to say 120, 130, then that's a different matter. But otherwise, I have known one thing: geopolitics is always the best, the number one opportunity for investors to buy. And that geopolitics could be on account of anything, and there could be other factors as well. But if you're an investor, absolutely nothing wrong. Just make a list of your stocks that you always wanted to buy, but not buying because the pricing was prohibitive. And now you will get those stocks at your price or maybe closer to your price. So do that. If you're a trader, respect the screen, respect your stop losses, and trade the market accordingly. Lovely. Excellent advice. Lots of insights there. Anuj, in fact, I want to change tracks here a little bit. So let's take a tiny little break, just a musical phrase, and we'll be back. Right, I'm back with you, Anuj. And Anuj, this little detour, changing of tracks, was to find out more about, in fact, find out about your early days. Did you always want to get into the media space? How did you join the media business? And what has your experience been like? What was it like working with your first boss or bosses in your early days? What have been your biggest learnings over the years? Long question, Anuj. Take it away. Okay, so back then, it was called CNBC India actually, long back. Okay, Okay, okay. so to cut a long story short, I was never keen on media. It happened to me by chance. I was doing my MBA from a college in Delhi, and it was a bit of a tough time because the economy was very slow, and we were not getting enough summer internship opportunities. All we were getting was sales, and I didn't want to do sales. Which year was this? Before 2001 or so? This was 2001. So I did my MBA 2001 to 3. So this was 2001 and 2, the tough period. I mean, 2003 onwards, we all know a boom started. But this is just before that. So my summer break was in 2002, the May June summer break, and I was not getting any internship. So I went to my faculty member and I said, look, I need to do something in finance only. I don't want to do marketing or sales. Get me something in finance. He said that there are not enough opportunities in Delhi for finance, so you need to go to Bombay. And I didn't want to go to Bombay. I was very close to my parents. So I said, no, I want to stay in Delhi. I said, there are so many newspapers like Economic Times, etc. Why can't I, intern there? Then she said, okay, in that case, why don't you, work at CNBC? And I was like, I had just started watching CNBC at that time. It was just 2 hours of programming and rest it was all about Asian market, global market. So I was fascinated by that. I said, yeah, I'll do that. And so my faculty member connected me to the managing editor of CNBC India at that time. It was Senthil Chengalvarayan. And Senthil interviewed me. He told me, look, Anuj, you can do the internship, but we won't pay you anything because we are just starting up. We don't pay anything to interns. I said, that's okay. I'm here to learn and not to earn. So I'm fine with that. So I did my summer training and Senthil hired me, but I did my summer training under Udayan Mukherjee, who was at that time the stocks editor and one of the very well-known faces for our audience. So I did my summer training under him. He clearly liked me. So much so that when my summer training was over, he told me, why are you going back to do your MBA? Just come back from tomorrow. I'm making you an offer. So I was like, no, no, yeah, I was like, no, no, let me at least complete my MBA. But then he kept his word. The day I wrote my last MBA exam was the day he actually gave me an offer. And he said that, okay, you come join from Monday. And that's when I joined CNBC TV 18. So, in a way, it's very interesting because in my life, I've never had to interview because I just straight away got the job and I've been there ever since. Working with the bosses, Senthil and Udayan were my two bosses at that time, and yeah, I mean, I learned something from both of them. I think I learned whatever I learned in terms of markets and how to analyze markets. I learned from Udayan. And whatever I learned in terms of how to handle people, how to handle breaking news, how to handle, stressful scenario, how to handle stressful environment, I learned from Senthil. So I learned something from Udayan and I learned something from Senthil. And for the longest, they were my bosses till, Udayan hung up his boots and went away. And then for 5 years, I was reporting to Shireen, who's the managing editor of CNBC TV 18. And what I learned from her was, how as a team leader you just give it, your everything,
and you're there with your team all the time, and you just support your team, and you're there 24/7. Yeah, Yeah, Shirin is and an amazing person, because absolutely, I knew her in my very early days in PR, long, long, long back. She was in Delhi and yeah, had always, then too, and even now, is a very approachable and extremely distinguished and preeminent journalist, really. absolutely, So great. I'm absolutely. sorry I interrupted you, but then I No, no, had no, to absolutely, absolutely, remember Shirin and I said I must share absolutely, that with you. absolutely, Please. nothing wrong with that. And of course, right now my boss is Santosh Menon. He's the chief content officer of the entire Network 18 group, and I think he's a phenomenal leader. He gives all the editors the freedom to choose what they want to do, what's good for the channel. Obviously, he keeps giving me inputs on what should be done and what should not be done, but never intervenes. And I think is someone who's always has a solution for every problem. You have a problem, he has a solution for everything. So in a way, I've been lucky. I've been blessed to have all the bosses. Rahul Joshi, my CEO, he's a wonderful support. So I think touch wood, all my bosses so far have been great. Lovely, lovely, lovely. And I'm sure you are also a wonderful boss. We'll talk about that and how you bring out the best in your teams, especially in the way you all produce your content, approach it, the kind of values, the kind of first chat you have when they come to you as freshers, raw and all, raring to go. So, Anuj, again, I'm stating the obvious, but you're a respected, highly respected influencer in the truest sense, in the best, most dignified sense of being an influencer in the stocks, investments, finance, and business overall space. देखिए, आप अपनी जगह हैं, but we often see so-called financial influencers of influencers, doling out misinformation, often through ignorance and perhaps occasionally also with a vested interest that cannot completely be called out but is visible to the discerning. Yeah. So, how should anyone protect themselves against such ignorant or mischievous misinformation by so-called influencers? एक तो पर्सनल लेवल पे, और अगर आप इंडस्ट्री को कुछ एडवाइस देना चाहें ताकि जन साधारण के लिए कुछ बहुत अच्छा हो सके, उनको और प्रोटेक्शन मिल सके, व्हाट वुड यू से? पहले मैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक राकेश झुनझुनवाला, हमारे स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला, जो हम सबके लिए मार्केट में एक भगवान का एक रूप हुआ करते थे, उन्होंने एक चीज हमेशा बोली थी कि स्टॉक मार्केट में कोई अपनी बीवी के बांगड़ बेच के, कोई अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख के, कोई अपना पूरी की पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स को एक जगह करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसका बहुत भरोसा होता है, ठीक है ना। उसके साथ गलत मत करिए, उसकी बददुआ मत लीजिए। आप जो बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, और वो मतलब जो एक, चाहे पंप एंड डंप हो, चाहे कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो, चाहे किसी से पैसा लेके अगर कुछ कर रहे हैं, किसी स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है ना, तो आगे जाके वो आपको कभी ना कभी चुभेगा। अगर जी, आपका कॉन्शियस क्लियर है, देखिए गलती सबसे होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती नहीं हुई, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे ना एक चीज का हमेशा एक फक्र रहा कि मेरा कॉन्शियस हमेशा क्लियर था। मैं गलत भी हुआ तो भी कॉन्शियस क्लियर था, बिल्कुल। और इसके लिए अगर आप मेरी ऑडियंस को देखेंगे ना, इवन जिस दिन मैं गलत होता हूँ ना, उस दिन भी वो लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं, आपकी क्या वजह से बात बहुत है! पैसा बनाया हमने, कोई बात नहीं है, हमको पता है कि आपका एफर्ट जेन्युइन था। तो पहले तो मैं बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात। इन लोगों को ये बोलूंगा कि प्लीज अपनी कॉन्शियस क्लियर रखिए, ठीक है। बाकी खैर देखिए, इंडस्ट्री में बैड एप्पल्स भी होते हैं, पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी खराब नहीं है, काफी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बैड एप्पल्स की वजह से सबको खराब नाम मिलता है। अब आपको बचना कैसे? देखिए अल्टीमेटली पैसा आपका है। मेरे जी, ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली ना फॉलो करें। आप पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड पेपर पे चेक कर लें, एक्सेल में चेक कर लें, अपना असली पैसा, रियल पैसा ना डालें। जी, 3 महीने तक, जी, 6 महीने तक चेक कर लें ट्रैक रिकॉर्ड। और ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट करेंगे ना आप, उसके बाद आपको प्राइस का बिहेवियर कुछ बता देगा। अगर उनकी रिकमेंडेशन के तुरंत बाद स्टॉक एक्चुअली गिरना शुरू हो जाए, तो मतलब वो खुद ही निकल रहे हैं। तो ये हम्म, चीजें ऑब्जर्व करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि स्टॉक उनके कहने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो अपनी जगह है। वो आप ये टेस्ट करिए कि कहीं वो एक क्लियरली वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ तो नहीं आ रहे। वो आपको स्क्रीन बता देगी, वो जी, आपको स्क्रीन जी, बता देगी। तो वो आप जैसे, कुछ लोग कोई स्टॉक बोलते हैं और उनके बोलने के बाद
वो बोलते हैं जब तक वो पीक बनाता है उसके वो लगातार गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों से बच के रहें, बस ऐसे लोगों से बच के रहें। बाकी उसके अलावा गलत हर कोई होता है, सही हर कोई होता है। जो एक बंदा जेन्युइन एफर्ट कर रहा है और अगर टैलेंट है जेन्युइनली तो उसको फॉलो करें। और किसी ने कहा भी था ये, आई विश आई हैड सेड दिस, लेकिन दैट इवन द वर्स्ट बुक represents the author's best effort. तो अगर गलती शायद कम नॉलेज की वजह से हो और मिस्चिफ की वजह से ना हो, शैतानी की वजह से ना हो, तो माफ की जा सकती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने कहा, बहुत जरूरी है कि ट्रैक रिकॉर्ड देखते रहें। ये बेचारा ऑनेस्ट इन्फ्लुएंसर जो है, बन गया इन्फ्लुएंसर, लेकिन हर बार गलती करता है और हर बार जो है गलत एडवाइस दे, वो भी बहुत ही खतरनाक है। तो excellent, Anuj. Really very good observations there. And at such a time, there is an important need for a credible, reliable platform. How do you ensure that CNBC Awaaz helps clear the air of misinformation and disinformation from so-called influencers? देखिए, so fact checking and thorough and due checks and diligence of your editorial content must be a very critical part of what your editorial teams do. Absolutely. So what is the kind of checks processes that are deployed at CNBC Awaaz to ensure that it continues to work as a truly respected purveyor and communicator of very credible information and news for every viewer of business television in India? Okay, so look, I mean, there are two things that we are responsible for, right? One is our own news reporting, which comes from our reporters and our Ji. researchers, and the other is the recommendation which comes from all the experts on the channel. Okay. Correct. Now, the information which is coming from our own reporters and our own researchers is something which is in our hand, because at the end of the day, we are the ones who are putting it out. So I am very clear about it. I would rather miss a story if there's even a slight iota of doubt of that story being wrong, rather than get brownie points of doing a story. So Excellent. I check with my team. I check with my team about the authenticity of the sources and everything before giving a go ahead, especially to price sensitive stories. Okay, I think that's what I do. Regarding the recommendations which come on the channel, there are 2 or 3 safeguard measures that we have taken. Look, Pawan, beyond the point, what a third party does on our channel, and after a certain stage, it's not in my hand, right? But what I can do is do checks and balances. So the checks and balances that we have in place are: number one, all our analysts who come on channel and talk about stocks are SEBI registered. We don't have anyone. You might be popular. We had 2 popular analysts on channel who refused to take SEBI certification. We said goodbye to them. We said, sorry, you get your SEBI certification and you come. They went home, they took SEBI certification, they came. What happens with SEBI certification is that if some call goes wrong or if someone feels that there's something mischievous which has happened, in that case, you can write to SEBI. And if they're registered with SEBI, any financial advisor would think twice before doing anything wrong purposely. Okay, so that's what we do. Second thing which we do is, as much as possible, we make sure that 90 to 95% of the stocks that are discussed on the channel are large stocks, are the futures and option stocks, which are tough to manipulate. We don't dabble into the cash stocks, the penny stocks, the 20 rupee stocks, the 30 rupee stocks, the 5,000 share volume kind of a stock, which is easy to manipulate, and you say it on air for 2 minutes and the stock will hit circuit. You might feel good about it, but we don't want to do that. We don't get into that. So I think these are the few things that we take care of. Excellent, excellent. So restraint, being circumspect, and being very, very sure that only the best and the certified, SEBI cleared, SEBI registered analysts come onto your platform. And of course, at the same time, also always doing due diligence on the editorial inputs, which is, all the stuff that the stories and the content that you and your teams create at CNBC Awaaz. Very, very good. I think all the bases are covered. So, corollary. Natural question next. Advertisers today are very careful, they're cautious about brand safety, as you're well aware. और brand safety में सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हम डिजिटल में हैं तो हमारे एड्स गलत प्लेटफॉर्म्स पे, अनसूटेबल प्लेटफॉर्म्स पे ना चले जाएं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स. बट ब्रांड सेफ्टी इज ऑल्सो because of the regulatory requirements and of course for their own brand equity. They want to be seen in the best company, right? And in your case, CNBC Awaaz offers businesses a really good
let's say, companion in itself, to showcase what they have to offer, what their performance, what their promise, and what their potential is, to investors, whether they're individuals or institutional across the marketplace. So that's really good. They're obsessed with it, right? How has CNBC Awaaz performed as a destination of choice for advertisers who are focused on brand safety? Give us some numbers and share the growth milestones, shareable numbers, if you will, in terms of कितने advertisers ने शुरू किया, किस तरह के sectors, किस तरह के लोग, and what kind of companies and stocks have come and sort of advertised on you. Okay, so I'll tell you one more thing, which is I think really fantastic about the network 18 group. That there's a Chinese wall between editorial and sales. So I won't know how much a brand is paying. I won't know what is the exact deal between a brand and the channel. And I am perfectly within my rights to tell to my marketing team that I don't want this particular brand to be advertising on my channel, and I don't care how much money you're getting from them. So Wow. that I think is the power which has been given to us by our CEO, and Hmm. I think that is remarkable. So I can't share numbers with you, but what I can tell you is the kind of investors, the kind of advertisers that we have. It's mostly dominated by financials and fintechs. Like, for example, Motilal Oswal is a big advertiser on our channel. There are some, companies which are coming up, those are some big advertisers with us. Some governments are advertisers with us, which is the case with most news channels. That's, I think, nowadays a bit of a barter deal. I mean, barter deal as in that you have across the network, on every platform, you have some kind of a advertisement. So that is there, though that does not influence our coverage. Let me add that. Yeah, I mean, that is there. And yeah, I mean, there's a lot of, then, for example, all the tier two, CNBC Awaaz being more catered to tier two and tier three audience, we get a lot of sort of local companies which advertise on CNBC Awaaz. Not as much luxurious brands. I think they prefer English medium to advertise, but we get a lot of mass sort of products. But dominance is mostly uh, brokerages, stock exchanges, for example, also give us a lot of advertising. So across the board, yeah, I mean that's the kind of advertising that we get. So, given that, the tier two cities, for instance, are like your primary markets, so to speak, in terms of your marketing and content targeting, so to speak, right? Of course, they will be in addition to all the, those 12, 13, 14 important जो गढ़ हैं, जो Mm, हर म्यूचुअल फंड में mm. 80% of all the, buying happens from there. So those obviously will be on your footprint. एट द सेम टाइम, जब आप इन छोटे मार्केट्स में जब या जा करके और उनसे बातचीत करते हैं, तो डज योर प्राइम टाइम शिफ्ट अ लिटिल लेटर इन द इवनिंग, बिकॉज वहाँ पे छोटे बिजनेसेस हैं, लोग अपना काम खत्म करके और फिर थोड़ा सा लेट घर पहुंचते हैं, एंड दैट्स व्हेन दे हैव द टाइम एंड अ लिटिल बिट ऑफ द bandwidth to be able to watch business television. Do you factor that in your scheduling of content for them, prime time sort of? So for business channels, actually prime time is morning 8 to 10 and then Correct. afternoon 2 to 4 because market No, opening. after the trading and everything is done. When it comes to follow up important shows that are Yes, yes. So, I mean, that prime time for us is also the same, 8 to 10. So at 8 to 9, we have, our flagship shows, and 9 to 10 also we have, 9 to 10 we have a political show because evening, a lot of people, even within the business community, want to understand what's happening in the politics. So 9 to 10, we also shift to politics. 8 to 9 is what we do, what we call Awaaz Adda. That's where we do mostly business and market, but sometimes politics also. For example, if the Bihar this caste census becomes the big boiling point or talking point, then we discuss that. Today, for example, we would be only discussing the Israel Hamas thing and the impact on business that it will have. So, and yeah, I mean, our 8 o'clock shows normally cater to tier two, tier three cities, and what is the number one talking point that day.
It can be in politics, it can be in markets, it can be in business, it can be anything. But that, but our main prime time is actually morning. The number one prime time is morning 8 to 10. So, Anuj, I'm really enjoying myself. This conversation is really insightful, very helpful. My next question to you is that as a Hindi business news channel, CNBC Awaaz is all about informing, educating, inspiring, and engaging its viewers with every important aspect of business broadly. So, tell me about the values and strategy. काफ़ी कुछ आप बता चुके हैं मुझे, लेकिन फिर भी the most important value that I see, which I'm sure you sort of transfer or pass on to every youngster who breathes the same air with you in a room when they talk to you about मन में चोर नहीं होना चाहिए, work honestly और किसी का बुरा मत चाहो, right? I mean, it sounds like a very naive thing to say in today's day and age, लेकिन कोविड के बाद जब ये एहसास हो गया है कि हम लोग कितने क्षणभंगुर हैं, हमारे जीवन हैं क्या, राइट? और ऐसे में अगर हम लोग किसी के लिए मन में गलत रखें, नाइव बात लगती है आज भी बिजनेस के स्पेस में, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. बट स्टिल टेल मी ओवरऑल अबाउट द वैल्यूज एंड द स्ट्रैटेजी that drive the content policy of CNBC Awaaz. Okay, so I think it's very clear. I keep retail viewer right at the top of my program. Whatever I'm doing in the morning, I want to know, would my retail be interested in doing this? Because one difference that is there between CNBC TV 18 when I was working at CNBC TV 18 versus when I moved to Awaaz is that CNBC TV 18 also had a lot of what you call uh, policy maker viewers, or influential CEOs, etc., which is also the case with Awaaz. It's not that it's not, but in Awaaz, the overwhelming majority is retail, which is watching us. Okay, and that retail wants, uh, and this retail wants to be educated. It doesn't want to be spoon fed. I think that's one big difference which has happened in the last 20 years. 15 or 20 years back, all retail wanted was tips. Give me tips. Just tell me what stock to buy. I don't care after that. I'll just put money in that. Now, retail wants to know, why did you say buy here? Why did you say put your stop loss here? What were the factors that you were looking at? So, you want to educate. So even now, when I do my morning strategy on Nifty and Bank Nifty, and I give levels to watch, I just won't simply say this level. I give a reason for that. I'll say that this is the 20-day moving average, or this is an option based, or this was yesterday's high, or this was last week's high. I explain. I give you reason, because there are a lot of people who just give random numbers, okay, which don't have any significance. Very respected names as well, but and they're not putting those numbers just to fool around. Those numbers have significance, but they don't tell you why those numbers are significant. What I'm trying to do is I'm trying to tell people that, okay, this is why this number or this level is significant. So we don't take our views for a ride. We understand and appreciate that that viewer is smart, and he has come, or he or she has come to our platform to get knowledge, and it's our duty to give them that knowledge. So that's the other principle that we follow. Excellent, excellent, excellent. And in fact, this whole dedication to the viewers with good, credible content on news across Network 18 is something that I have seen and experienced. And ये जो है ना, being circumspect, you know, सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखना, Okay. because eventually you feel and consider yourselves responsible for the viewers' safety and security, whether it's financial, Absolutely. or any other. So, right. So, on the basis of that content policy, Anuj, आप मुझे ये बताएं कि कुछ अच्छे से प्रोग्राम्स या कंटेंट के जो इनिशिएटिव्स आपने लिए हों उनके बारे में, which you might have helped to create and develop for CNBC Awaaz, and even perhaps advise the rest of the group on for things that they could do on other channels. कुछ बताएं. So I think the biggest initiative that we have taken is something called Market Ki Pathshala, which is where we only address people's queries. We do nothing else. Okay. Okay, this is what we do daily, and this is a digital only show that we do between 11:30 to 12 daily. It's sort of an appointment viewing in which we get a lot of viewers,
and we take the questions as they come on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, all the platforms we are live, and we keep taking their questions and we try to answer them. So I think that is one initiative which I'm really proud of because that's something that I have done myself. So that's one. I think we have started some more initiative. We have started doing some kind of TV shorts where we talk about know your company. We talk about the interesting facts of some companies. We tell them, how these companies have evolved, etc. So that's another initiative that we have taken. Investor education, apart from this Market Ki Pathshala, in terms of starting stuff like some small nuggets about F&O Pathshala and all, what you should do in F&O, what are the different terms and how they're used in markets. That's something that we have done. And then, of course, whenever we come to know about some kind of investor grievance or something, we try to, reach out to the management, because of where the grievances are, and we try to sort of resolve them. These are few things that we have done. There's a show that we do, which is called Traders Hotline, in which, traders call and on air directly, they ask their queries and we try to resolve them. Most of them call because they're making some losses, so we try to advise them on whether you should cut your loss or you should carry on, have some kind of a stop loss or whatever. So I think whatever we do, we keep the retail at the top of our mind. Excellent. There's one word that describes this is like a missionary zeal to help educate. You already have created this category of the informed, curious, smart, well guided, and independent investor, so to speak. You know, at the retail level, and at the end user, non corporate but individual level. Really, very very good. That's really good. That's really contributing to the creation of wealth and well-being, so to speak, across the country. अच्छा, अब एक बात बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंटेंट पॉलिसी आपने बहुत बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं, शोज हैं. व्हाई इज दिस शो इन ये पाठशाला वाला जो शो है, ये सिर्फ डिजिटल पे क्यों है, टेलीविजन पे क्यों नहीं है? ये सब डिजिटल पे इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है वो एकदम लाइव होता है. उस समय कोई न्यूज आ रही है, कुछ स्टॉक पे रिएक्शन आ रहा है, तो उससे हम दूर जा नहीं सकते. तो इसके लिए वैसे उस समय पे हमारा एक हमने सोचा था कि इसको टीवी पे भी रखा जाए, और हो सकता है आगे जाके उसको टीवी पे भी रख सकते हैं हम. हो सकता है कि पूरा ना रखें, लेकिन एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए टीवी पे भी रखें. ये हमारा थॉट प्रोसेस है वैसे, लेकिन देखते हैं इसको आगे कि ये किस तरीके से आएगा. उसमें उसमें होता क्या है ना, एक और चीज, ये वाला जो शो है ये एक्चुअली यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब पे ज्यादा है. तो इसमें कोई हम बहुत ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं यूज करते हैं. वो रॉ शो होता है, अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म जा रहा है. तो टीवी पे ब्लैंक स्क्रीन बहुत टाइम तक हम रख नहीं सकते, कोई ना कोई ग्राफिक चाहिए होता है उसके लिए. तो इसके लिए उसको हमने थोड़ा सा जो है डिजिटल ओनली रखा है. लेकिन हाँ, फीडबैक अच्छा है आपका. और अगर एक बार कोशिश करेंगे कि टीवी पे भी रखा जाए, उसको देखते हैं क्या फीडबैक आता है. हाँ, जिस तरह आपके स्टॉक मार्केट टिकर्स चलते रहते हैं, वैसे ही यू कैन हैव दैट बिल्कुल काइंड ट्राई ऑफ फीड. सो सीएनबीसी आवाज इज रिस्पेक्टेड, ओके, और इतना बढ़िया कंटेंट आप बनाते हैं. नाउ टेल मी व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दैट ग्रेट कंटेंट. मैंने तो अपनी तरफ से सोच के जो मुझे लगा है कि आपने तो कैटेगरी ही नई बनाई है और आपने पूरे देश को एजुकेट किया है सेकेंड और थर्ड टियर मार्केट्स में. लेकिन अब मुझे इम्पैक्ट के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, एक दो व्हाटएवर, जिससे कि पॉलिसी में चेंज हुआ है, विच द रिपोर्टाज फ्रॉम सीएनबीसी आवाज ट्रिगर्ड. कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ, आ रहा है, याद आ रहा है. हमने ये एक, हाँ, ये सबसे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ जो इसी महीने हुआ था. बीएससी में एक ट्रेड हुई थी, सेंसेक्स की ट्रेड हुई थी, 67,000 की कॉल ऑप्शन, जिसका की रेट ₹4 होना चाहिए था. वो ₹250 पे ट्रेड हुई थी, और एक एक ट्रेडर का बहुत बड़ा लॉस हो गया था. उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया था, और वो टेक्निकल फैक्टर की वजह से हुई थी, क्योंकि वो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट में डेप्थ नहीं थी, तो वो जिस मर्जी रेट पर वो ट्रिगर हो गई थी ट्रेड. तो इसके लिए वो हमने एक ये एक उस पे हमने एक प्रोग्राम किया था. बाय द वे, उस शो पे, उस मेरी वो जो एक ट्वीट है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगा. उस पे उस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यू आए थे.
और वो मतलब हमारे फाइनेंशियल इसमें ना मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। मिलियन, मेरे 2-3 ट्वीट्स पे खैर 2-3 मिलियन भी आ चुके हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, तो उस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे। और मुझे उसी दिन सेबी की तरफ से मैसेज आया था कि आपने बहुत शानदार शो किया और हम इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्या बात। उसके बाद मैंने अगले दिन तो नहीं, अगले हफ्ते मैं बीएससी के सीईओ के पीछे पड़ा रहा। तो बीएससी के सीईओ को मैं लेके आया अपने स्टूडियो में, मैंने उनसे बताई बात, मैंने डिस्कस की उनके साथ, मैंने बताया कि देखो ये गड़बड़ हुई है इस सिस्टम की वजह से। तो उन्होंने माना कि हाँ ये गलती हुई है। और उसी दिन शाम को सिस्टम चेंज हुआ। और वो पूरा का क्या पूरा बात। जो क्रेडिट है वो सीएनबीसी आवाज का था, क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने उसको रेस किया था। और सीएनबीसी आवाज ने एक दो मुद्दे और भी रेस किए थे जिस पर भी सेबी ने एक्ट किया था। तो और ये एक और मुद्दा सीएनबीसी आवाज ने रेस किया था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक विंडफॉल टैक्स है। विंडफॉल टैक्स हर 15 दिन के बाद चेंज होता था। तो उसमें ना एड हॉकिज्म आ गया था, कई बार 15 के बजाय 18 को आ रहा है, फिर कई बार 1 तारीख के बजाय 4 तारीख को आ रहा है। तो एक या दो को लगता था आपको कि चेंज नहीं आया, फिर वो एकदम से आया था। तो मैंने इसका एक पॉइंट रेज किया था कि इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और उसके बाद से हर 15 दिन में एकदम बाई क्लॉक वर्क वो आ रहा था। तो पॉलिसी मेकर्स हमको सुनते हैं, और काफी जो है अगर कोई भी हम ढंग की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। क्या बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अनुज, अगला सवाल करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि इजराइल और हमास का जो चल रहा है इस वक्त, उस बड़े से मसले के दौरान दोपहर को भी हमारी रिकॉर्डिंग होनी थी। उस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर भी आपने अभी थोड़ा सा टाइम निकाला है, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच इंडीड। जस्ट शोज हाउ डेडिकेटेड यू आर। Thank you for rearranging this because at that time I just could not. So thank you so much No, for no, no. being here. Absolute pleasure. I'm so happy that you really burn the candle at both ends. और उसकी वजह से आप हमारे शो पर भी हैं। तो अब ये बताइए कि सीएनबीसी आवाज जो है वो एक, हम जानते हैं, इट्स वेरी रिस्पेक्टेड फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी अमंग्स व्यूअर्स एंड एडवर्टाइजर्स और बिजनेस इकोसिस्टम में भी अक्रॉस इन इंडिया। तो अब ये इन ब्रीफ छोटा सा फ्रॉम डे वन शेयर अ ब्रीफ हिस्ट्री कि चैनल ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे वो बढ़ा है, चाहे वो व्यूअरशिप में हो, रेटिंग्स में हो, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिबिलिटी में हो, किस तरह से ये चैनल ग्रो किया है, बताइए। देखिए, मैं तब सीएनबीसी टीवी 18 में था जब सीएनबीसी आवाज का जन्म हुआ था। और तब मतलब किसी को नहीं लग रहा था कि सीएनबीसी आवाज इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन एक बड़े भाई को जैसे खुशी होती है ना, छोटा भाई इच्छा करे, तो ऐसे सीएनबीसी टीवी 18 में जब मैं था तो काफी खुशी हो रही थी। आवाज अ, के नंबर्स बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। और आवाज के साथ एक इशू बस ये है कि आवाज अ, काफी बड़ी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिसमें दो प्लेयर हैं, इस मार्केट में दो प्लेयर हैं। और कंपटीशन भी ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा है जितने बड़े हम हैं। चाहे आप डिजिटल मैट्रिक्स देखें, हालांकि पिछले 4-5 महीने से हम नंबर वन रहे हैं, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक को अगर आप मिला दें तो। लेकिन कभी कभी 19-20 हो जाता है। तो वो एक फैक्टर रहा है। CNBC TV 18 on the other hand has been a monopoly, and there also there's only a two-channel market, but CNBC TV 18 is like 98% or 99% of the market. So it's been a virtual monopoly. So the entire English market is CNBC TV 18. Hindi market is obviously much bigger than the English market. I would say about six जी। to eight times bigger than the English market, but it's divided equally between us and our competitor. Uh, and we've had some really big views. For example, I think last month we had on YouTube close to 50 million views What overall. Yeah, wonderful. yeah, overall. So Wonderful. we are like we're setting new milestones in terms of business news almost on a every month basis. Insta, YouTube views, and Bark ratings. I mean, our competitor has not been part of Bark ratings for last 1 year, so we have had 100% of the share, but that's meaningless. I think from next week they are again entering the Bark They rating. are again, yes, absolutely. Yes, we reported that. Yes, so I think that will be then a real competition in terms of then we will know where we stand actually. But we are fairly confident that we have a good product, and we will be in a good place. एक्सीलेंट। चलिए, सीएनबीसी आवाज से बढ़ के आगे चलते हैं। हाउ डू यू व्यू द ग्रोथ
of the media industry across linear TV broadcasting, streaming, connected TVs, फिर in the spaces of other spaces like AVGC, movies, radio. What are the good opportunities for the nation and economy through M&D, and why do you think so? I think linear TV, especially news, unfortunately, is right now in the tail end. The only thing is, and this is what my boss Senthil used to say, the tail is really long. The tail is really long, but we are in the tail. I think you can sense that by the kind of growth that people have got over the last 5 or 6 years in terms of salary, in terms of compensation, in terms of perks and everything. It's dried down. Okay, for a lot of people. So I think TV, unfortunately, has not been able to innovate itself, and it's given up the ground to a lot of digital play. Now, where business news gets advantage is because we are catering to news, breaking news, which impacts stock prices, and in digital you have that lag of 5 or 10 seconds. That is enough to sort of make the difference of life and death in business news. So in business news, we still have that advantage that people still want to watch us on TV. Otherwise, I think Hmm. digital has taken over. And I think what is really remarkable in digital, for example, yesterday, me and my wife, we were watching for some reason, we were watching the match on different Hotstar. I mean, on Hotstar, but Digital I was source. watching it on my mobile and she was watching it on her mobile. And I was amazed Yeah. to see that, during the break, I was getting a different ad and she was getting a different ad. I think that is where digital has been able to master it because it's been able to program the ad according to her choice or according to my choice. Uh, so, Literally. so, Segmentation of one जिसको कहते हैं. एब्सोल्युटली सो पहले क्या होता था आपके पास दूरदर्शन ही था सिर्फ मैं तो वो जमाना भी देखा दूरदर्शन था संडे को 9 बजे जी. महाभारत आती थी सब आके बैठ हम्म, जाते थे 9 बज के 10 मिनट तक ऐड चलते थे एक ऐड वो निर्मा का आता था एक ऐड वो विमल का आता था एक ऐड किसी और का आता था वो 4-5 ऐड निर्मा आते का. थे तो सबको देखने होते थे आपको हम क्या करते थे हमको पता होता था कि ये तो 9 बजे के 9:10 पे स्टार्ट होगा तो जब तक ऐड चल रहा है कोई देखता नहीं था ठीक है अब क्या हो गया है कि अब एडवर्टाइजर्स ने एकदम एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी शुरू कर दी तो उसमें डिजिटल काफी आगे निकल गया है और वो फ्यूचर है वही फ्यूचर है और अब तो खैर बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने अपने खुद के ब्रांड्स निकाल दिए हैं आज की डेट में सबके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं अच्छा कर रहे हैं और कई रिस्पेक्टेड लोगों के यूट्यूब चैनल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और उससे उनको व्यूज भी मिल रहे हैं व्यूज के पैसे भी मिल रहे हैं प्लस एडवर्टाइजिंग के भी पैसे मिल रहे हैं तो आई थिंक वो काफी इंडस्ट्री एक चीज जो अच्छी हो गई ना मैं इस चीज में जरूर कहूंगा एक चीज जो अच्छी हो गई है वो ये कि जो बड़े बड़े न्यूज ब्रांड्स है ना उनका स्नूटीपन जो है ना वो खत्म हो गया है क्योंकि अभी क्या है ना पहले क्या होता था पहले ये बस 4-5 न्यूज चैनल थे यही डिसाइड करते थे कि क्या नैरेटिव सेट होगा आज की डेट में ऐसा नहीं है आज की डेट में पब्लिक सेट करती है कि क्या नैरेटिव होगा फॉर राइट और रॉन्ग आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट ठीक है वो हो सकता है गलत करेक्ट. है और काफी चीजें गलत भी हो रही हैं आई कंप्लीटली एग्री विद दैट बट डेमोक्रेसी है इसमें जो पब्लिक चाहेगी वही होगा तो आज की डेट में वही हो रहा है जो पब्लिक चाहे कुछ कुछ क्या बहुत सारे नियरली ऑल परहैप्स आई कुड बी रॉन्ग न्यूज़ चैनल्स पहले ब्रेकिंग न्यूज़ का एक स्पेशल आवर एक टाइम सेट करते थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ भाई जब न्यूज़ पहले आई है तो आपने उसको ब्रेक तभी करना चाहिए तो एक तो वो न्यूज़ होती है जो आई है एकदम से और उसको आपने ब्रेक किया कोई आपदा हो सकती है कुछ एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है कुछ भी हो सकता है अग्रेशन हो सकता है and then the other is the planned journalism. I don't use the word planned in a bad way. I use it just as features editors use. You know, a good story, a good something, deep dive. तो आपके चैनल पे इस तरह के प्लान्ड फीचर्स की क्या महत्ता है यूज करते हैं आप? हमारे यहाँ स्कोप ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है ना अगर कोई न्यूज आ गई और अगर आपने उसको होल्ड कर लिया तो फिर वो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी उस न्यूज की हमारा तो बिजनेस ही पूरा वो उससे चलता है क्योंकि वो सीधा एक न्यूज आएगी उसका इम्पैक्ट आएगा स्टॉक पे उसके बाद आप उसको बाद में होल्ड करके कोई फायदा नहीं है अब जैसे कई बार होता है हाँ हम क्या करते हैं मैं जैसे कोई स्पेशल एनालिसिस किया हमने मान लीजिए कि आज इसराइल की वॉर हुई तो हमने कोई एक स्पेशल एनालिसिस किया मान लीजिए वो स्पेशल एनालिसिस मान लीजिए हमने 12 बजे करीब तैयार हो गया हम उसको कहते हैं कि चलो इसको हम सीधा 2 बजे उतारेंगे हमारे प्राइम टाइम से उतारेंगे क्लोजिंग वाले से उतारेंगे उसको That's what उतना I कर meant लेते हैं हाँ actually by उतना कर planned. ले, उतना जी. कर लेते हैं वो चलता है लेकिन अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है उसको हम होल्ड नहीं करते हैं वो हम होल्ड कर भी नहीं सकते
अनलेस कोई एक्सक्लूसिव है, अनलेस कोई ऐसा है कि जैसे मान लो मैं अब हमारे चैनल पे फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू होना है और हमको पता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने और कहीं जाना नहीं है, उसको फिर हम अच्छे से हम्म। इंटरव्यू हो जाएगा, अच्छे से पहले सुनेंगे, तैयार करेंगे ग्राफिक्स, अच्छे से बाइट वेल तैयार करेंगे, अच्छे एस्टम तैयार करेंगे, अच्छे सुपर्स तैयार करेंगे, वो सब क्रॉस प्रमोट करेंगे पहले एग्जैक्टली कि भाई वो हाँ करेंगे, इतने बजे वो है करेंगे, वो जो वो करेंगे, अपॉइंटमेंट वो व्यूइंग के करेंगे, लिए। वो करेंगे, वो करेंगे, वो तो हम भी जी करते हैं जी और हर कोई जी करता है। जी। आपकी जो ऑन ग्राउंड एडिटोरियल रिसोर्सेज हैं, reportage teams and the kind of infrastructure that they have at their disposal, what is the reach and spread in India? And as a respected Hindi business news channel, what do you do on a continuous basis learning and development के लिए, आपकी एम्प्लॉयज और आपकी टीम्स के लिए क्या करते हैं तो आप? हमारी रीच काफी स्ट्रांग है, दिल्ली में तो हमारी सबसे स्ट्रांग रिपोर्टिंग टीम है। और हमारा दिल्ली में फोकस इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में काफी कुछ पॉलिसी पे डिपेंड करता है और पॉलिसियां सारी दिल्ली में बनती हैं। दिल्ली में हमारी बहुत वाइड रीच है। उसके अलावा हमने रिसोर्सेज जी सेट किए हुए हैं कुछ मेट्रोज में, जैसे अहमदाबाद में हमने एक रिसोर्सेज सेट किए हुए हैं। बाकी जगह पे हमारा एक एडवांटेज है नेटवर्क होने का। जैसे बैंगलोर, जी। चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पर सीएनबीसी आवाज से खुद के रिपोर्टर्स नहीं है, लेकिन अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको नेटवर्क से मिल जाता है। हमारा न्यूज 18 का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ह्यूज। ह्यूज, यस। ह्यूज है, वेरी बिग। ह्यूज है। तो उससे हमको मिल जाता है। जहाँ तक बात है रिपोर्टर्स वगैरह के लिए या किसी के लिए भी, तो बीइंग पार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप, हमने एक लिंक्डइन लर्निंग्स और कोर्सेरा वगैरह के काफी एक्सेसेस दिए हुए हैं हमारी टीम मेंबर्स को। और हमारी बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। जैसे डिजिटल को लेकर काफी ट्रेनिंग होती रहती है, और इंस्टाग्राम टूल्स वगैरह को लेकर, यूट्यूब वगैरह को लेकर काफी वर्कशॉप्स होती रहती है हमारी, काफी वर्कशॉप्स वगैरह हमारी होती रहती हैं। तो वो हम हमारे एम्प्लॉयज के लिए करते एक्सीलेंट। अनुज, अभी आपने मुझे बता ही दिया है कि आपके चैनल की जो डेजिग्नेटेड टारगेट ऑडियंस है अमंग्स व्यूअर्स एंड एडवर्टाइजर्स वो कौन है, और एडवर्टाइजर तो व्यूअर की टारगेट ऑडियंस के पीछे ही आता है, तो ये तो आपने बता दिया। अब ये बताएं कि अपनी जो टारगेट ऑडियंसेस हैं हैं। उनके बीच आप सीएनबीसी आवाज को मार्केट कैसे करते हैं? देखिए पवन, मैं तो अपनी खुद की जो सोशल मीडिया रीच है उसको यूज करता हूँ। मेरे आज की डेट में ट्विटर पे करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे करीब करीब 60,000। इंस्टाग्राम में थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो अभी थोड़ा सा होपफुली जल्दी वहां पे भी क्रॉस होगा नंबर अच्छे वाले। और हमारे चैनल वाह। के खुद के काफी फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे हम नंबर वन बिजनेस ब्रांड है फॉलोअर काउंट में। यूट्यूब पर हम नंबर वन बिजनेस ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। ट्विटर पे हम नंबर वन नहीं है, ट्विटर पे हम सीएनबीसी टीवी 18 से पीछे हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया को बहुत यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को पॉपुलर कराने के लिए। प्लस जब जरूरत होती है, कुछ स्पेशल चीजें लॉन्च होती हैं, तो हम एक एज ए नेटवर्क एक लेवरेज करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अभी एक हमारी एक प्रॉपर्टी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, एफएनओ गुरुकुल, तो उसको हम धीरे धीरे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पुश करेंगे। तो उसमें फिर वो नेटवर्क का थोड़ा सा पुश मिलता है, वरना डिजिटल पे हम पूरा ऑल आउट जाते हैं, अपना जितना भी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। और हम सब एंकर्स की अलग अलग काफी सोशल फॉलोइंग है, ब्रांड की अलग से है, वो मिला के अच्छा हो जाता है। और अनुज, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे। आपने अभी कहा ना कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप नंबर वन हैं बिजनेस चैनल्स में। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, ख़ासतौर से यूट्यूब। देखिए, एक अभी रिपोर्ट आई थी पीछे जिसने ये कहा था कि यूट्यूब की ज़्यादातर कंजम्पशन, ज़्यादातर मतलब स्लाइटली ओवर 50%, अराउंड 58-59% इज डन ऑन कनेक्टेड टीवीज। और कनेक्टेड टीवी जो देखता है वो शायद एक स्लाइटली बेटर परचेजिंग पावर वाली ऑडियंस होती है ना? तो आई थिंक CNBC आवाज हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अमंगस्ट एडवर्टाइजर्स टू पुश इट्स कनेक्टेड टीवी ऑडियंसेस एज अ टारगेट ग्रुप दैट शुड बी वाइड फॉर, शुड बी एम्ड फॉर बाय द एडवर्टाइजर्स। उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं? क्या विचार है आपका? नहीं, ये तो आपने एक्चुअली मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया। तो मैं इस पर मैं इस पर बात करता हूँ हमारी सीईओ से, कल ही बात करता हूँ इसके बारे में। एक अच्छा क्या बात। अच्छा पॉइंट दिया आपने मुझे, इस पर मैं 100% इस पर काम करूंगा मैं। अब तक ये मेरे जहन में आई नहीं थी बात, लेकिन सिंस आपने बोली है तो मैं ऑब्वियसली आई एम श्योर कि दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट।
लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बार उनसे बात करूंगा इस बारे में। क्या बात है, दिस ह्यूमिलिटी, दिस ओपननेस, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जिस ओपननेस से आपने बताया मुझे। नहीं, जो जो चीज है वो है, जो चीज है वो मैं फैक्ट कर दूं, मैं बेकार में फैक्ट कर दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे कुछ चीज नहीं पता तो मुझे नहीं पता। और मैं एक और चीज जी। बोलता हूँ, मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ, मैं तो हमेशा हम्म। ये चीज मानी है, जैसे कभी मेरी टीम भी अगर मेरे लिए लिखना चाहे ना मार्केट गुरु, में मना कर देता हूँ उनको कि नहीं प्लीज, हम सब शिष्य हैं मार्केट हम्म। के, हम में से कोई गुरु नहीं है, हम रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और जिस दिन हम क्या सीखना बात बंद है, कर क्या देंगे उस बात दिन है। हम खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं तो हमेशा आज भी यही मानता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं। आज मैंने नया सीखा कुछ किया। I'm Pawan Chawla, founder editor of MediaBrief.com. You're tuned to MVP, the Master's Voice podcast. With me is Anuj Singhal, managing editor, CNBC Awaaz. Anuj, why is CNBC Awaaz, according to you, the best business news channel in India? CNBC Awaaz is the best news channel in India because the viewers say that, and I am no one to overrule their judgment. That's the kind of love and message that I get from my audience wherever I go, whenever I go, and whenever I interact with them, whether it's on social media platforms, which I do almost on a daily basis. I make sure I interact with my audience for at least 30 minutes a day. And whenever I go out and I meet people, that's the feedback that I get, that CNBC Awaaz is the most credible business channel, and I am going to give a lot of credence to what they believe, and hence I would say CNBC Awaaz is the number one channel. Amazing. More strength to you, Anuj. तो अनुज सिंघल, मैनेजिंग एडिटर, CNBC आवाज, आपके साथ आज ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. आई रियली लर्नड अ लॉट ऑन एटीट्यूड एंड ऑन ड्राइविंग प्रॉफिट विद पर्पस. आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? नहीं पवन, देखिए ये मीडिया ब्रीफ का जो MVP पॉडकास्ट है, मुझे वाकई में आज बहुत मजा आया। और आई एम श्योर कि मैं प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। और ये मेरे यहाँ तो पहला पॉडकास्ट है एक्चुअली। और थैंक यू सो मच। अरे हाँ बिल्कुल। मैंने पॉडकास्ट किए हैं एज एन इंटरव्यूअर, लेकिन मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो मीडिया जी, ब्रीफ को और पवन आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। थैंक यू एवर सो मच एंड थैंक्स अगेन अनुज, आपने इतना समय दिया और इतनी दरियादिली से हमारी तारीफ भी की. बहुत अच्छा लगा. वी होल्ड इट प्रेशियस टू आवर हार्ट्स. एंड थैंक्स ऑल्सो टू वंस अगेन to Amoli and Mitali of your excellent comms team for having made this interaction possible. Thank you, Pawan, and all the best to you and your entire team. Thank you so much. Thank you ever so much. So that was Anuj Singhal, managing editor, CNBC Awaaz, my distinguished guest on this episode of MVP, the Master's Voice podcast. I enjoyed my conversation with India's most popular, most experienced, and certainly amongst the most knowledgeable and respected stock market anchors. I found it extremely insightful. I do hope that you also did. Till we meet again in the next episode of MVP, the Master's Voice podcast, this is the host and friend Pawan Chawla saying thank you for tuning in. Take care. Stay informed. Bye-bye.